Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 23rd of December 2020, Wednesday. Inspiration of the day is success is falling 9 times and getting up 10. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Center issues first zero coupon recap bonds of rupees 5,500 crore. Finally, centre government has taken the move in order to recapitalize the Punjab and Sindh bank. And in a first move of its kind, centre government has issued zero coupon bonds for recapitalization of Punjab and Sindh bank worth rupees 5,500 crore and allow the bank to park the paper in its held to maturity category at the face value rather than discounted market rate. Few terms here are very important before understanding the news pop. Number one is bond. I think we all know what is bond, and number of times we have discussed the simple definition or simple meaning of bond. Bond is basically the debt instruments, or we can say that an instrument of indebtedness of the bond issuer to the bond holders. तो कोई भी कंपनी अगर मार्केट से पैसा उठाना चाहती है तो वो बॉन्ड इशू करती है, और जो बॉन्ड होल्डर होता है आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, वो कंपनी को क्रेडिट देते हैं कि कंपनी अपने जो वर्किंग कैपिटल या जो अदर एक्सपेंडिचर्स हैं उनको फिनेंस कर सके. तो बेसिकली जो बॉन्ड होता है इट्स अ डेट इंस्ट्रूमेंट. जब कभी भी किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस की क्रंच होती है, फंड की क्रंच होती है, दे इशू द बॉन्ड इनटू द मार्केट. वो इनवाइट करते हैं पब्लिक को कि हमें लोन दीजिए और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम आपको इस पर्टिकुलर परसेंटेज से और इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट से आपका बॉन्ड वैल्यू या जो आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट से आपको हम रिटर्न करेंगे से आफ्टर 5 ईयर्स और 10 ईयर्स. तो ये होता है बेसिकली बॉन्ड. दूसरा टर्म यहाँ पे यूज हुआ है कूपन बॉन्ड्स और कूपन रेट. बेसिकली जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं? एक टर्म आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा, कूपन रेट्स. तो अगर बहुत सिंपल डेफिनेशन में आपको बताऊं तो कूपन रेट इज द interest rate, or we can say it is the rate of interest paid by bond issuer on the bonds face value. तो एक टेक्निकल टर्म है. बेसिकली कूपन रेट को सिंपलीफाइड टर्म में हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं. कि अगर कंपनी ने 100 रुपये लिए हैं तो वो बॉन्ड होल्डर्स को प्रॉमिस करती है कि आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इतने इंटरेस्ट रेट से आपका मनी वापस किया जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट कूपन रेट जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पब्लिक होती है, वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है, कंपनी को पैसा देती है. जाहिर सी बात है जितना अच्छा कूपन रेट होगा, जितना अच्छा इंटरेस्ट रेट होगा, उतना अच्छा कंपनी को रिस्पॉन्स मिलेगा इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड्स. इतना ज़्यादा लोग, इतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स उस पर्टिकुलर कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे. अब यहाँ पर एक और टर्म है दैट इज फेस वैल्यू. तो अगर हम फेस वैल्यू को डिफाइन करें तो इन अ बॉन्ड इन्वेस्टिंग, face value is the amount, is the total amount paid to a bond holder at a maturity date as long as bond issuer doesn't defaults on its payment. तो इस तरह की कई सारी वैल्यूज होती है. एक होती है फेस वैल्यूज, एक होती है डिस्काउंटेड मार्केट रेट, और एक होता है पार वैल्यू. बहुत ज़्यादा डिटेल में तो डिस्कस नहीं करेंगे इनका रिलेशन हम. So face value is a basically financial term that is used to describe the nominal or the rupee value of a security as stated by its issuer. For stock, basically face value is the original cost of a stock as listed on a certificate, whereas for bonds it is the amount paid to the holder on a maturity date. Typically it may be in terms of hundred or thousands denominations. Generally we refer face value for the bond is par value or simply par. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे मैम यहाँ तो इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी डिसाइडेड है, देन फेस वैल्यू हो सकता है मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो है वो वेरी कर रहा हो, तो आप या तो मैच्योरिटी का अमाउंट डिसाइड करेंगे कि मैच्योरिटी में इतना अमाउंट देंगे, या इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेंगे. जितना होल्डर ज़्यादा लॉन्ग होल्ड करेगा, कंपनी कॉल बैक नहीं करती बॉन्ड्स की वैल्यू को, उतनी ज़्यादा उसे फेस वैल्यू मिलनी चाहिए. फिक्स्ड फेस वैल्यू या इंटरेस्ट रेट और कूपन रेट दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं बेसिकली. तो अगर हम बात करें बॉन्ड इन्वेस्टिंग की, कैसे बॉन्ड में इन्वेस्ट होता है एंड हाउ दीज फेस वैल्यूज एंड कूपन रेट्स एक्चुअली वर्क अपॉन. जैसा कि हमने डिस्कस किया, फेस वैल्यू इज द
par value or is the amount that is paid to the bond holder on a maturity date, and that is promised by the bond issuer on certificate that after certain period of time this company will pay you this amount. Basically, on a secondary market we all know that the interest rate fluctuates, interest rate fluctuate करते हैं, बॉन्ड भी सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होती है बॉन्ड्स की भी, और हम सभी को पता है कि इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं एज पर द डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक सिचुएशंस. So, for example, if interest rate are higher than the bond's coupon rate, then the bond is sold at a discount market rate. यहाँ पर हमने वर्ड यूज भी किया discounted market rate. Same, if the interest rate are lower than the bonds coupon rate means bonds interest rate, the bonds is sold at a premium, that is above par. While the face value of a bonds provide for a guaranteed return, the face value of a stock is generally a poor indicator of the actual worth. तो आप ये कह सकते हैं कि फेस वैल्यू थोड़ा सा एक गारंटी होती है जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं कि इतना अमाउंट तो कंपनी उनको देगी ही देगी irrespective of the interest rate, prevailing interest rate or the coupon rates. So a bond's face value is the amount the issuer provide to the bond holder once maturity is reached. A bond may either have an additional interest rate or the profit may be based solely on the increase from the below par original issue price and the face value at a maturity. तो बॉन्ड डिस्काउंटेड मार्केट रेट पे इशू किया गया है या बॉन्ड एट पार रेट पर इशू किया गया है इन कंपैरिजन टू फेस वैल्यू, इससे जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं उनके रिटर्न अफेक्ट होता है बेसिकली. Although par values of bonds are generally static in nature, there is a noted exception with the inflation linked bonds. अगर inflation linked bond है, then in that case the par value of the bond may increase or decrease, whose par value is adjusted by inflation rates for predetermined time period. तो inflation linked bonds होते हैं, they work differently, they work as per the inflation or prevailing inflation rate in the economy. तो अगर हम बहुत सिंपल तरीके से बताएं फेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो सिंपली टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम you add the present value of interest payment plus the present value of the principal you received at maturity. So on the basis of this we calculate the face value of bond. और पार पर इशू होगा या डिस्काउंटेड मार्केट रेट पर इशू होगा, दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट. अब यहाँ पर दूसरा और एक टर्म है जो यूज हुआ, दैट इज हेल्ड टू मेच्योरिटी कैटेगरी. क्या बेसिकली हेल्ड टू मेच्योरिटी कैटेगरी, तो जो डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ होती है उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ कंपनी, वर्थ ऑफ अ कंपनी, कितनी कंपनी पे वर्थ है या कितनी कंपनी पास फाइनेंस अवेलेबिलिटी है कि अपनी लाइबिलिटी को ऑनर कर सकती है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर categorized. As we all know, Punjab and Sindh the bank is suffering from the financial distress situation. So at this time, the zero coupon bonds issued by Punjab and Sindh bank will be kept under this category. That category is called as held to maturity or HTM category. Basically, held to maturity securities are purchased by the owner and purchased to be owned until maturity. तो बेसिकली एच टी एम कैटेगरी की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, दे आर परचेज टू बी हेल्ड टिल मेच्योरिटी. For example, a company's management might invest in a bond that they plan to hold to maturity, and there's a different accounting treatment that is used for ट्रीटमेंट ऑफ एच टी एम सिक्योरिटीज़. तो ऐसे सिक्योरिटीज़ जो कि शॉर्ट टर्म में जिनको लिक्विडेट कर सकते हैं कंपनीज या होल्डर्स, उसके कंपैरिजन में जो एच टी एम सिक्योरिटीज़ होती हैं उनके लिए अकाउंटिंग सिस्टम एक डिफरेंट तरीके का ट्रीटमेंट होता है. दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस कि ऐसा क्या ट्रीटमेंट होता है, बट आप इतना समझ लीजिए ऐसे सिक्योरिटीज़ जिनको शॉर्ट टर्म में लिक्विडेट किया जा सकता है उनका ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है अकाउंटिंग में. और जो एच टी एम कैटेगरी की सिक्योरिटीज़ होती है डेफिनेटली उनका मीनिंग होता है कि उनको आप शॉर्ट टर्म में लिक्विडेट नहीं कर सकते. यू हैव टू होल्ड दैट सिक्योरिटी टिल द मेच्योरिटी डेट एट डिसाइडेड बाय द बॉन्ड issuer or the security issuer. So bonds and other debt vehicles such as certificate of deposits are most of the common form of HTM investments. So basically this type of bond that central government is issuing for recapitalization of Punjab and Sindh bank
have determined payment schedules, have fixed maturity date, and they are purchased to be held until they are mature. तो ऐसे सारी सिक्योरिटीज जिनकी एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी डेट होती है दे कैटेगराइज एज एसटीएम कैटेगरी। आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे ऐसी कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटीज हैं जो कि एसटीएम कैटेगरी में नहीं आती हैं। यहाँ मैंने आपको बताया जितने डेट व्हीकल्स होते हैं जस्ट लाइक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, ऑल दीज आर कैटेगराइज्ड एज एचटीएम कैटेगरी बिकॉज दे should be hold, they purchase to be hold till the maturity and they have the fixed payment schedule, they have the fixed maturity dates, and till then the owner has to keep it. अब आ जाते हैं न्यूज़ में। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीरो कूपन बॉन्ड्स इशू किए हैं। जीरो कूपन बॉन्ड्स जनरली डू नॉट बेयर एनी इंटरेस्ट रेट एंड आर ट्रेडेड एट अ डिस्काउंटेड रेट टू द फेस वैल्यू। तो आप सभी को पता है डिस्काउंटेड रेट टू द फेस वैल्यू मीन्स जो prevailing interest rate and that is actually lower than the coupon rate. That is why this particular bond is issued on a discounted face value. Zero coupon bonds means they do not bear any interest rate. और अगर ये ट्रेड भी करे जाएंगे तो वो डिस्काउंटेड वैल्यू पर ट्रेड होंगे। एंड द मूव इज सीन एज अ रेजिंग कंसर्न इन द अकाउंटिंग फ्रेटर्निटी एंड द बैंक ऑडिटर, दो RBI has made it clear that it for now after internal deliberations. हालांकि जो अकाउंटिंग कंसर्न है, फ्रेटर्निटी है, वो बहुत कंसर्न है कि जीरो कूपन बॉन्ड का क्या पर्पस है एंड हाउ वाई दे आर एक्चुअली इशूड एट अ डिस्काउंटेड टू द फेस वैल्यू। बट आरबीआई ने इसको क्लियर कर दिया है आफ्टर मच इंटरनल डेलिब्रेशंस। तो अगर आरबीआई ने क्लियर कर लिया इसका सीधा मतलब ये है कि नाउ सेंटर इज गोइंग टू इशू दीज जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो फिलहाल के लिए एज पर द गवर्नमेंट गजटेड नोटिफिकेशन 5 नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी, नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग मीन्स जीरो कूपन बॉन्ड्स और जीरो कूपन सिक्योरिटीज विल बी इशूड ईच फॉर 15 years maturing on December 14 between financial year 2030 to 2035 that have been issued to public and Punjab and Sindh bank. And government made it clear that these bond will not be qualified for SLR. It means बैंक इसको SLR के फॉर्म में यूज नहीं कर सकता है. So now Punjab and Sindh bank will get the amount only on maturity of a zero coupon rate. So this is one of its kind रिकैपिटलाइजेशन प्लान। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक इस तरह के जीरो कूपन बॉन्ड्स इशू करके ऐसा इस तरह का बैंक्स को रिकैपिटलाइजेशन का जो स्टेप आज तक नहीं लिया। तो इट इज़ जो अकाउंटिंग फ्रेटर्निटी वो कह रही इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एंड हाउ दिस विल वर्क, वेदर इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द मार्केट एज वेल एज द बैंक, दैट इज फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 4, हायरिंग बेटर अप्रेजल्स बैक ऑन इंडिया INC एजेंडा. So adopting the new hybrid normal of working remotely as well as from the office, cautiously optimistic companies are looking to hire more people and provide better appraisal in financial year 2021 as they step out of pandemic ravaged the 2020. हम सभी को पता है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत सारा लॉस हुआ कंपनीज को बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक लॉकडाउन, और उस लॉस जिनशियल लॉस की वजह से कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज ने ले ऑफ भी किया, बड़ी बड़ी कंपनीज ने ले ऑफ भी किया। और जो कंपनीज ले ऑफ नहीं कर पाई हैं, जिन्होंने अनएथिकल मेजर को अडॉप्ट नहीं किया ले ऑफ का, उन्होंने कंपनी अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल को स्टे कर दिया, उनके इंक्रीमेंट को स्टे कर दिया इन ऑर्डर टू मीट अप द कॉस्ट, क्योंकि उस समय बिजनेस में रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा था एंड दे हैव टू मीट आउट ऑल द एक्सपेंसेस, मोर स्पेसिफिकली द एम्प्लॉय कॉस्ट। तो इसलिए कुछ कंपनीज ने ले ऑफ किया, कुछ कंपनीज ने परफॉर्मेंस अप्रेजल को स्टे कर दिया, कुछ कंपनीज ने इंक्रीमेंट को स्टे कर दिया, कुछ कंपनीज ने नई हायरिंग को स्टॉप कर दिया। इवन कुछ कंपनीज ने तो जो पहले ऑफर लेटर दिए थे कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू जो एक्सटर्नल कैंडिडेट्स को, उन कुछ ऑफर्स को ऑनर भी नहीं किया, उनकी ज्वाइनिंग पर भी स्टे लगा दिया। तो बाय डिफरेंट मेजर्स, बाय डिफरेंट मीन्स, organization, whether it is a small, medium or the large organization of the companies, they all were trying to reduce their expenditure, more specifically employee cost and other overhead expenses in order to survive or sail through this pandemic and a liquidity crunch situation. But now
indicators, economic indicators, macroeconomic indicators, microeconomic indicators, high frequency indicators, all these are indicating the revival into the economy in every sector. And because of this, now companies are planning for more hiring and trying to change their appraisal system, trying to change their compensation system. Why? Because all companies are on a new hybrid normal working situation. Why? Because certain percentage of employees are working from home, certain are working from office, the type of working, contact, all have been changed. And because of this changing system, companies have to come up with the new sort of HR practices or policies. The pandemic emerged as a biggest inflection points for the Indian job लैंडस्केप. तो जो वर्क फ्रॉम होम वर्कर्स थे, रिमोट वर्कर्स थे, ऑन डिमांड वर्कर्स थे, फ्रीलांसर्स थे, उन सब का भी अब रोल जो है वो इंक्रीज हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम इट, जो हमारा नया लेबर कोड आया उसके अकॉर्डिंग भी कंपनीज की एचआर पॉलिसीज या लेबर पॉलिसीज में चेंज होगा. एंड नाउ companies are planning for hiring. Why? Because economy is on recovery path. जो भी कंपनीज ने पहले फाइनेंशियल ईयर 2020 में जितनी भी कंपनीज थी जिन्होंने फिलहाल के लिए हायरिंग प्लान्स को डीप्रायोरिटाइज कर दिया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रोक दिया था, नाउ एज पर द न्यू इकोनॉमिक आउटलुक or there is a increased certainty into the economic outlook, industries such as travel, hospitality, retail, aviation, retail estate, constructions, automobiles, all are actually trying to recover from it and all actually trying to go for new hiring, new performance appraisal, new incentive system. Although companies are still very cautious, but they are optimistic about the economic recovery. So overall intent to hire recovered smartly from 11% during the lockdown period to 18% of for half year, and this number is growing as per the different consultancy firms. तो अभी फिलहाल के लिए कंपनी cautious optimism approach लेकर चल रही है, but they have started in hiring and they have started appraising their employees on the basis of new hybrid landscape. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 6. वोडा अपील डेडलाइन एंड्स टुडे बट गवर्नमेंट अनसर्टेन. The government is still uncertain about the appeal against an arbitration award relating to retrospective tax demand against British telecom major Vodafone PLC, even though the deadline for it ends on Wednesday. हम सभी ने डिस्कस किया था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो कि हेग में है, उसने वोडाफोन के फेवर में वर्डिक्ट दिया था, अवार्ड दिया था, और गवर्नमेंट ने ये कहा था कि वो इस पर्टिकुलर अवार्ड के अगेंस्ट अपील करेगी. आर्बिट्रेशन के जो आर्बिट्रेशन का अवार्ड हुआ है इसके अगेंस्ट अपील करेगी सिंगापुर कोर्ट में. सिंगापुर में जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसमें अपील करेगी. हालांकि जो उस अपील करने की जो लास्ट डेट थी वो 23rd of December थी एंड गवर्नमेंट इज स्टिल अनसर्टेन. गवर्नमेंट ने अभी भी कोई भी डिसीजन नहीं लिया है, कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया वेदर गवर्नमेंट इज गोइंग टू file appeal or the petition against the arbitration award that is announced by permanent court of arbitration at Hague. जिसमें permanent जो कोर्ट थी उसने ये रूल आउट किया था कि इंडिया गवर्नमेंट जो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड कर रही है ब्रिटिश टेलीकॉम मेजर से 22,000 करोड़ रुपए की इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, दैट इज actually breach of guarantee of fair and equitable treatment under the bilateral investment protection pact between India and Netherlands. और उसके बेसिस पर इस पर्टिकुलर डिमांड को इलीगल या अनफेयर डिक्लेयर किया था. तो गवर्नमेंट ने कहा था डेफिनेटली गवर्नमेंट विल गो अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर अवार्ड, बट स्टिल एज पर द न्यूज़ government has not taken a decision. Recently our finance minister have discussed extensively this matter with the senior bureaucrats and the secretary labor offices and head of the concerned department. So there are chances that government may not go for appeal against this arbitration award by the permanent court of arbitration at Hague. हालांकि गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि सिंगापुर की जो सीट है आर्बिट्रेशन की वहां पर जाएगी गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर अवार्ड के अगेंस्ट, बट स्टिल देयर इज नो डिसीजन. तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हो सकता है गवर्नमेंट अभी ज़्यादा टाइम या और टाइम मांगे उस पर्टिकुलर परमानेंट कोर्ट जो हेग में उसे टू
अपील अगेंस्ट दिस अवार्ड। तो हो सकता है कि एक इस बात की भी चांसेस है कि गवर्नमेंट मोर टाइम सीक करे फॉर अपीलिंग अगेंस्ट दिस अवार्ड, बट अभी तक ऐसा कोई डिसीजन या ऐसा कोई अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने नहीं किया है अगेंस्ट दिस आर्बिट्रेशन अवार्ड। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 7। आयरन ओर प्राइसेस likely to stay elevated. The red hot rally in iron ore prices may continue into the new year with Chinese demand going strong and disruption in supply rising globally and in the domestic market. And because of this, the prices for iron ore will stay increasing, will keep increasing. अगर आपको याद हो तो फरवरी 2020 में जब कोविड-19 चाइना में बिल्कुल पीक पर था, तो उस समय जो इंटरनेशनल प्राइसेस थे आयरन ओर के, दैट actually skyrocketed by over 75% to the 7-year high of the over $150 per ton. And this is because of the resurgence in the economy into the China because of this COVID-19. तो चाइना में इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन की वजह से आयरन उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि चाइना इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ आयरन ओर. बट नाउ द इकोनॉमी ऑफ चाइना इज रीबाउंड and the production of iron has been started in China as well. The World Steel Association, that represent approximately 85% of global steel production, had projected that in June a 1% increase in steel demand for iron in 2020. तो जितने भी वर्ल्ड पे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, उसको देखते हुए जो भी एसोसिएशंस हैं, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हैं, पर्टिकुलर iron ore के केस में, they all are anticipating the huge demand, and because of this huge demand, this association is also anticipating that there's still increase into the iron ore prices, and this increase will continue. Global iron ore prices have increased from $70 a ton in financial year 2018 to $94 in 2019 and $110 in financial year 22. And as per the expert, it will still increase because of the high demand of steel. Why high demand of steel is there? Because number of governments are actually infusing much money into infrastructure as a stimulus for reviving their economy. अगर हम इंडिया का केस ले तो इंडिया के केस में भी हमने डिस्कस किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बार गवर्नमेंट बजट में बहुत ज़्यादा एलोकेशन करेगी इन ऑर्डर टू रिवाइव द डिमांड. और इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, इट मीन्स देयर इज अ डिमांड फॉर आयरन, देयर इज अ डिमांड फॉर स्टील, and if there is a demand, there is a increase in प्राइस. तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिमुलस की वजह से, स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी मार्केट की वजह से, स्ट्रॉन्ग डिमांड की वजह से आगे आने वाले टाइम में भी आयरन ओर का जो रेट है, जो प्राइस है, वो इंक्रीज होगा. और जैसा कि हमने देखा कि लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यूसली इंक्रीज हो भी रहा है. एंड दिस इज द प्राइस ऑफ डिफरेंट आयरन ओर्स इनटू इंडियन इकोनॉमी. तो जब देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली प्राइस बढ़ ही रहा है, ऑल्दो देयर इज अ स्लाइट फ्लक्चुएशन एट दिस टाइम, बट स्टिल द प्राइस इज गोइंग ऑन. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स. India's 2 youngest unicorns are a pair of startups that provide personalized news and entertainment, have raised a huge amount of funds from the secondary market. As Glance locks the funding worth rupees $145 million, whereas the Dailyhunt parent raises the $100 million. अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, they are raising the fund, and why it is important for us, why we are studying it as a news. Why? Because it is one of the two of the very important startups of India, and if these startups are raising funds, they are turning themselves into unicorn, decacorn. It means there is a पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटलुक फॉर इंडियन इकोनॉमी. अगर छोटी छोटी कंपनी स्टार्टअप से पैसा उठा रही हैं मार्केट से, दे आर रेजिंग द फंड्स, दे आर टेकिंग द लोन्स, इट मीन्स दे आर एंटिसिपेटिंग द पॉजिटिव डिमांड, दे आर एंटिसिपेटिंग द पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटलुक फॉर अपकमिंग फ्यूचर. डेफिनेटली कोई भी कंपनी मार्केट से पैसा तभी उठाएगी जब उसको पता है कि आगे आने वाले टाइम में उसका बिजनेस बढ़ने वाला है. अगर हम ये देख रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में इंडियन इकोनॉमी रिकवर नहीं कर रही, बिजनेस नहीं होगा, डिमांड नहीं होगा, डेफिनेटली एज अ बिजनेसमैन वी विल नॉट गो फॉर फंड रेजिंग. And if the
startups are going for fundraising, that's a very good indicator for economy. And we all know, in case of Indian economy, startups, small and medium sized enterprises, MSMEs, are called as growth engines. And if MSMEs and startups are raising funds from the market, it is a good sign for any economy. अब देख लेते हैं next clip. Wipro to acquire Metro AG's IT vertical in $700 million deal. So Wipro on Tuesday said it has signed the deal worth rupees $700 million digital and IT partnership deal with Metro AG, and now Metro AG belongs to Wipro. And apart from it, Wipro is also open for 9,500 crore buyback offer on December 29. और जैसा कि हमने सभी ने देखा कि द रीसेंट पैंडेमिक ड्यूरेशन के टाइम में आईटी इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया है. अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था टाटा के भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, आईबीएम के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, जिसमें टीसीएस जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर आ गई थी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन. So the estimated deal value for the duration of first 5 years is approximately $700 million, and with the intention to extend up to 4 additional years, it can be potential spend up to $1 billion, Wipro said in a statement. तो अभी 5 साल के लिए फिलहाल के लिए डील फाइनल हुई है और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि आगे आने वाले 4 सालों तक इसको और एक्सटेंड किया जाएगा. तो दैट इज द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. फिलहाल के लिए विप्रो इज गोइंग टू एक्वायर द मेट्रोस एजी. AG is IT vertical basically. Student minded, IT verticals है, do not get confused with Metro AGs. आप देख लेते हैं next clip. Government invites bids to privatize shipping corporation. We have already discussed this news that government has decided to privatize the number of PSUs in which the shipping corporation of India is one. So finally, government has invited the bids for privatization of shipping corporation of India, that is SCI. So BPCL के privatization के बाद अब SCI का नंबर है. An interested buyer will have to submit an expression of interest to acquire the government 63.7% stake in shipping corporation of India. The government अपना 63.75% का stake sell करने जा रही है, and for that tender has been invited. That's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. I use the Mumbai edition of Business Standard. And if you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share, and subscribe. Thank you.